Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स JEE क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। हियर वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 10th अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन है बेसिकली इज लेट ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट यहाँ पे क्या गिवन है 2a होल टू द पावर क्या है 2a होल टू द पावर है लॉग बेस ई ए राइट इक्वल टू व्हाट बी सी होल टू द पावर क्या है लॉग बेस ई बी राइट। एंड दूसरा जो इक्वेशन है दूसरा क्या है हमारा b टू द पावर क्या है लॉग बेस ई टू है एंड इक्वल टू क्या है a टू द पावर लॉग बेस ई सी। सो फॉर लॉग बेस ई वी कैन आल्सो राइट एल एन राइट एल एन लॉग बेस ई को मैं एल एन भी लिख सकते हैं। ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ तो 2a टू द पावर एल एन ए और ये हो गया क्या बी सी टू द पावर एल एन बी नेचुरल लॉग बेसिकली। ओके टेकिंग log 2 टेकिंग ln टू बोथ साइड टेकिंग ln टू बोथ साइड। सो मैं दोनों और इसके ln ले लेता हूँ। ओके सो फाइन। सो व्हाट डू वी गेट हियर। सो ये क्या हो जाएगा ln 2a टू द पावर क्या हो गया ln राइट ln a और यहाँ पे क्या हो गया ln b c टू द पावर क्या हो गया ln b। सो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या हो जाएगा ln a log m टू द पावर n log n टू द पावर m जो है वो m log n हो जाता है राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया log a और ये क्या हो गया log 2a इक्वल टू व्हाट ये हो गया तो हमारा क्या ln b एंड ln b c एंड log m n का फार्मूला क्या होता है log m n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। So that we will apply in the numerator and in the left hand side and right hand side. So log a what I can write log a equal to log a into what I can write log 2 plus what log 2 plus log 2 plus log a। So I write here log 2 plus log a एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जो है log b इंटू में क्या है log b। सो आई राइट हियर log b ओके log b एंड इंटू में क्या हो गया log b प्लस ब्रैकेट में log m प्लस log n का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दिया। ओके एंड व्हाट वी हैव द नेक्स्ट रिलेशन। सो द नेक्स्ट रिलेशन क्या है अपने पास नेक्स्ट रिलेशन जो है उस रिलेशन को भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। सो नेक्स्ट रिलेशन इज एंड जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा वो है log b टू द पावर log 2। सो आई राइट हियर b टू द पावर log 2 ओके इक्वल टू व्हाट c टू द पावर a टू द पावर log c a टू द पावर log c। So again taking log to both side on taking log ln to both side okay here also। So what do we get here we get here the ln b to the power log 2 here ln a to the power ln c। So we can write this as ln b okay ln b and here ln c ln a okay। So this is the second relation that we get। now what I will do here is let what here log a को मैं x मान लेता हूँ log a is x and log b is y and log c को मैं z मान लेता हूँ। सो जो यहाँ पे पहला रिलेशन है वो क्या हो जाएगा log a की जगह पे मैं x रखूँगा। सो x into what x into so we can write here x into therefore we can write here x into log 2 plus what log 2 plus x log 2 plus x। so I write here log 2 plus x equal to what y ब्रैकेट में क्या हो गया y plus y ब्रैकेट में हो गया हमारा y plus z ओके। सो वी कैन राइट दिस एट फर्स्ट एंड द सेकेंड हमारा क्या हो गया सेकेंड रिलेशन जो है वो हो गया दिस वन इज y। सो y log 2 इक्वल टू व्हाट y log 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y log 2 इक्वल टू बेसिकली x और इंटू में z हो गया। सो यहाँ से log 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ दैट इज व्हाट एक्स जेड बाई वाई एंड पुटिंग इट इन फर्स्ट। सो फर्स्ट में पुट करने पे ये x इन ब्रैकेट व्हाट log 2 is what x z by y plus what x right equal to this is what y square plus yz। now what I do here is just multiply and take the LCM। so y this is what x square z plus what x square y equal to this is what this is y
स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड, नाउ आई टेक एवरीथिंग टू लेफ्ट, सो व्हाट डू वी गेट हियर, हमारा क्या रिजल्ट हो गया, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस व्हाट, वाई क्यूब माइनस व्हाट, minus y cube minus y square z equal to 0, minus y square z equal to 0. So now I will factorize this, so I will take x square common, z plus y, here minus y square common, so we get y minus z equal to what, 0, y plus z equal to 0. So we get here the x square minus y square, in other bracket y z plus y equal to 0. So again factorize this part, so x plus y and x minus y and x plus y plus z equal to 0. Now equating each factor to 0, so x plus y equal to 0, x minus y equal to 0 and y plus z equal to 0. So from here we get x equal to minus y, and from here x equal to y and y equal to minus z. So this result is not possible, right, not possible. Why? Because not possible, because a b c are distinct, right, a b c are distinct, this value is not possible because a b c are distinct. So a b c are distinct, so this is not possible. Okay, this is not possible, a b c are distinct, so log a and x equal to y, I am neglecting this value, log a equal to log b, right, a and b are distinct, so log a and log b cannot be equal, right, so this will result will be not acceptable. Okay, so we have here the basically x equal to minus y, so I write here x equal to, therefore x equal to minus y, and y equal to what do we get, y equal to minus z, okay, y equal to minus z. But we have here is what here, log 2 equal to x z by y, log 2 equal to, we have here log 2 equal to x z by y, so what I do here is I just put here the x, and for z I can put here the minus y, okay, minus y divided by what, y and y get cancelled, so minus x equal to what, minus x equal to log 2, so from here we get x equal to minus log 2, and y equal to what, y equal to minus x, so y equal to minus into minus plus log 2, and z equal to what, z equal to minus log minus y, so this is what, minus log 2, but what is x, is log a, equal to minus log 2, so from here we get a equal to 1 by 2, okay, log b equal to, y is log b equal to log 2, so from here we get b equal to 2, and z is what, log c, and that is equal to minus log 2, so this is also log to the power, log 2 to the power minus 1, so yes, we get c equal to what, minus 1 by 2, c equal to what, 1 by 2, so we get the value of abc, we get the value of abc, and we need to find what, we need to find here the 6a plus 5bc, so 6a is 1 by 2 plus 5b is what, 2, and c is what, 1 by 2, 2 and 2 get cancelled, so 6 is cancelled by 2, so 3, so this is 3 plus 5, so it is what, 8, right. So answer for this question is 8. Hope you will be clear this with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.